Hello students, now I am starting chapter 12, that is Heron's formula. So in this formula we find the area of triangle in which three sides, length of three sides are given. For example, if we have a triangle ABC in which three sides are A, B and C. So here area of this triangle we can find by this formula. This is given by Heron, so it is called Heron's formula. So area of triangle ABC, that is equal to root of S minus A, S minus B and S minus C, where A, B and C are the sides of triangle ABC जिसका हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, and small s is the semi perimeter means half of perimeter of triangle ABC. उस triangle का semi perimeter है means half of perimeter. So how can we can find this? S equals to perimeter upon 2. If perimeter is given, then directly we can find by dividing it by 2, and perimeter is the sum of all the sides of any figure. So here it is triangle, means here three sides are there, so we can find perimeter by adding all the three sides, means A plus B plus C and upon 2, that is S equals to A plus B plus C upon 2. Only this one is a formula. So in this chapter now we start exercise 12.1. So in this exercise first question now I am starting, that is a traffic signal board indicating school ahead. एक traffic signal board है जिस पे लिखा हुआ है school ahead, is an equilateral triangle with sides A उसकी side है. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? Means there is a triangle, board is like equilateral triangle है ये A, B, C. And here the sides are small a, small a, small a. होनी क्या चाहिए? स्मॉल ए, ये B और ये C. ट्राइंगल के अकॉर्डिंग जो हम लेते हैं अभी तक, तो यानी कि ABC all the three sides are equal, which is equal to small a. Clear? Now question number 1, exercise 12.1. So in this perimeter is given, perimeter of triangle ABC, that is given 180 centimeter, and triangle is of type equilateral, so all the sides are equal, means A plus A plus A, that is equals to 180, or directly we can put 3A. So it will be 3A equals to 180, that means A equals to 180 upon 3, that is 60 centimeter. Means all the three sides are, means B equal to C equal to A, all the three sides are 60 centimeter. Yeah, A, B, C, anyhow we can write. Now S we have to find, that is perimeter upon 2, and perimeter is given directly, that is 180. So 180 upon 2 means it is equals to 90 centimeter. So S equals to 90 centimeter. Now by using Heron's formula, that is area of triangle ABC, signal board है triangular. So root S minus A, S minus B and S minus C. Now put the values, putting, so S that is 90, S minus A means 90 minus 60, S minus B 90 minus 60, again S minus C, that is also 90 minus 60, because S is 90 and all the three sides are equal to 60. So for 90 we can break 3 into 30, because all the differences are same, so it is 30, it is also 30, it is also 30. So there are two pairs of 30, that means this pair, this pair. So 1 out, that means 30 into 30 into root 3 is left, so it is 900 root 3 centimeter square. That is answer. Area of this triangular signal board is 900 root 3 centimeter square. Now after this second question. So in question 2, there is also a triangle in which sides are given. Second question, I am raising this one only, we can use this formula same. So second question is, the triangular side walls of a flyover have been used for advertisement. The sides of the walls are 122, 22 and 120. 122 meter, 22 meter and 120 meter. These are the three
sides 122, 22 and 120. The advertisement yields an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its walls for 3 months. 3 months के लिए hire किया है. How much rent did it pay? So firstly we have to find the area of this triangle. So for this firstly we find S, that is A plus B plus C upon 2, means 122 plus B is 22 plus C is 120 upon 2. On adding both, so it is 364 upon 2, that means 132 meter, that is S. Now by using Heron's formula, area of triangle, I am putting these values same here. So S, that is 132, S minus A, 132 minus A, that is 122 into 132 minus B, that is 22 into S minus C, so 132 minus C, that is 120. Now on solving, 132 into 132 minus 122, that is 10 into 22 minus होगा, so 110 into 20 minus होगा, तो 120 means 12. Now factorize. So here we are writing 132 into 10, that is 1320 into, अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर लें, so it is also 1320 और दो पेयर हो गए, simply we can write 1320 meter square. It is the area of the triangular, what is this, फ्लाईओवर बॉल है, उसकी एक वॉल का एरिया आ गया. अब हमें इसी को रेंट पे लेना है, कितने मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए, और कॉस्ट जो गिवन है वो 1 ईयर की गिवन है 5,000 रुपीज़. ठीक है. सो नाउ आई एम रेजिंग इट दिस वन ओनली. नाउ कॉस्ट इज गिवन. सो रेंट फॉर 1 ईयर ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, मीन्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया का जो रेंट दिया है, दैट इज गिवन रुपीज़ 5,000. इट इज़ गिवन 5,000. Now since it is given ना, so since therefore now rent for 1 year को क्या हम 12 मंथ लिख सकते हैं. 12 मंथ, 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12. so 12 मंथ्स ऑफ मीटर स्क्वायर. एरिया कितना है, 1320, जो वॉल है जो हमें रेंट पे लेनी है उसका एरिया गिवन है 1320, तो ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू, आई एम रेजिंग दिस डायग्राम ऑल्सो, नॉट इन इट नो, 13 रुपीज़ 5,000 into 1320. Now therefore rent for, now we can find for 1 month. Now we have to divide it, area is same, so it is divided by 12, means rupees 5,000 into 1320 and divide by 12. Now we have to find the area cost for 3 months. So therefore rent for 3 months ऑफ एरिया सेम रहेगा, फ्लाईओवर वॉल वही है, रुपीज़ 5,000 इंटू 1320 अपॉन 12 एंड 1 की कॉस्ट थी, अब 3 की कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं, लेस टू मोर मीन्स मल्टीप्लाई, सो वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाई 3. 3 से हम इसे कैंसिल आउट कर देंगे 4, और 4 से इसे कैंसिल आउट करेंगे, 4 3 या 12, 1 12, 4 3 या 12, 330. नाउ रुपीज़ 533 5 165 एंड 2 zeros here, 1 is here. So it is 3 zeros are here, 1 is here, so 4 zeros. This is the cost. Rent for 3 months. Clear? Now I am erasing. After this, next question is third. Third question भी same है. All the 3 sides are given and you have to find the area. So same you can find. Fourth question is find the area of triangle. 2 sides of which are 18 and 10. दो साइड अगर दिए 18 और 10, पेरीमीटर गिवन है 42, मीन्स आप थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग पेरीमीटर, दैट इज a प्लस b प्लस c. सो 42 इक्वल्स टू 18 प्लस 10 प्लस c इक्वल्स टू 42. नाउ वी कैन फाइंड थर्ड साइड, दैट इज 18 and 28, माइनस होगा 42 से, सो इट विल बी 14. देन यू कैन फाइंड द एरिया बाय यूजिंग सेम Heron's formula. नाउ आई एम सॉल्विंग फिफ्थ क्वेश्चन. नाउ इन दिस सम, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12, 17, 25. जो तीनों साइड्स हैं ए बी सी, उनका रेशियो गिवन है आपको, ए बी सी इनका रेशियो आपको गिवन है 12:17:25. सो हम कॉमन रेशियो x मान सकते हैं. सो एज्यूम कर सकते हैं लेट a इक्वल्स टू 12x, b इक्वल्स टू 17x एंड c विल बी 25x. इनको हमने एज्यूम कर लिया. एंड पेरीमीटर इज गिवन 540 मीटर. मीटर है सेंटीमीटर, इट इज सेंटीमीटर. पेरीमीटर इज गिवन 540 सेंटीमीटर. सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल है कोई भी नाम दे दो या ट्राइंगल ही रहने दो, ट्राइंगल इक्वल्स टू 540 सेंटीमीटर. और पेरीमीटर होना क्या चाहिए, सम ऑफ ऑल द साइड्स, मीन्स a प्लस b प्लस c. सो पुटिंग द वैल्यूज, दैट इज 12x
plus 17x and plus 25x equals to 540 centimeter. 12, 17, 29 and 25, that is 54. So it will be 54x equals to 540. Then if we separate x, so it will be 54 se divide means 10 centimeter. X will be 10 centimeter. Now we can find the sides. So it is a equals to 12x tha, so 12 into 10, that is 120 centimeter. Now b equals to 17x, so 17 into 10, that will be 170 centimeter. And now c is 25x, so 25 into 10, that is 250 centimeter. Clear? Now we have to find the area. So firstly we have to find s. So we are finding now s. S is a plus b plus c upon 2, or directly perimeter is given, so direct we are putting perimeter upon 2. Perimeter is 540, so 540 upon 2 divide कर लीजिए, so it will be 270 centimeter. Now use Heron's formula. So area of triangle, so area of triangle equals to root s minus a, s minus b and s minus c. Now putting the values, so root s, that is 270, s minus a, so 270 minus a, that is 120. Now 270 minus b, that is 170. Next is s minus c, so 270 minus c is 250. Now 270 into 270 में से 120 माइनस होगा, so it will be 150 into 170 माइनस होगा तो 100 into 250 माइनस हुआ तो 20. नाउ सिंप्लीफाई, फैक्टराइज करना है आपको. 27 देखो 10 एक जीरो ये है, 1 2 2 4 है ना, 4 जीरोज है, तो मैं इस जीरो को यहाँ दोनों को अलग कर ले रहा हूँ. ठीक है, 100 अलग हो जाएगा. ठीक है ना. नाउ 27 इंटू 10, तो 10 मैंने बाद में 27 को फैक्टर कर दूँ मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 27 हो जाएगा. इंटू 10 को मैंने अलग रहने दिया क्योंकि यहाँ भी हमें 10 मिल रहा है, तो 10 इंटू 15, 15 के फैक्टर होंगे 3 इंटू 5. क्लियर. 100 को ऐसे रहने देता हूँ मैं, 10 इंटू 10 सीधे एक पेयर कॉमन आ जाएगा. 20 के फैक्टर्स 2 2 या 4 5 या 20, सो 2 इंटू 2 इंटू 5. नाउ काउंट द पेयर्स. देखिए स्टार्टिंग हम कर रहे हैं 10 से पहले या 2 से करते हैं. 2 कितना है देखिए, स्मॉलेस्ट 2, 1 पेयर है मीन्स 2 कम आउट 1 टाइम. 3 1 2 3 4 यानी 2 pairs, that means 3 twice comes out. 3 and 5 now, 5 twice group है means 1 pair है means 1 time come out 5. Now it is 10, 1 2 3 4, 4 times है means 2 pairs हैं, तो 2 time outside from root. Now simplify, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 5 जा 90 and into 100 means 9000 centimeter square. This is the question 5. Now remaining questions do yourself. One question is left, so you can solve